कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षव गृहे स्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयो छायानिवृत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामति संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाणमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि वा वः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसा अवगत परमार्थसतत्वो ब्रह्मक्षत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितल परिपालनायां नाथ प्रवर गुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दत् यद्यपि तदप्रत्यानातव्यं तदधिकरण आत्मनोन्य अस्माद् असतोपि पराभवन अन्वीक्ष्यमाणः। अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिभ्रमणानुध्यान व्यवसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोनिरखिल निगम निजगणपरवेष्टितः स्वभवनाद् अवततार। स तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथ ममर परिव्रडैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्ध गन्धर्व साध्य चारण मुनिगणैरुपगीयमानो गन्ध मादन द्रोणीम् अवभाषयन् उपससर्प। तत्र हवा एनं देवर्षिहंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पितापुत्राभ्याम् अविहिताञ्जलिरुपतस्थे। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येनातितरा मुदित गुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच। श्रीभगवान् उवाच निवोदतादेतमृतं ब्रवीमि माशूयितं देवमहर्षप्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दृष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तदुमद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदृष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैवत्स वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पदः ईशाविशिष्टं यवरुधन्महिङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्ताय तद्यद् अयुङ्क्तनाथ चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना मुक्तोऽपि तावद्भ्रमयात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन् अभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः
किं त्वन्यदेहाय गुणान् वृङ्क्ते भयं प्रमत्यस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहसत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रम किं नु करोत वद्यं य सर्षपत्नान् विजिगीषमाणो ग्रहेषु निर्वेश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्येत् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितसत्सपत्नः भुङ्क्षेह भोगान् पुरुषातिदृष्टान् विमुक्तसङ्गप्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच। इति समभिहितो महाभागवतो भगवस्त्रिभुवन गुरोरनुशासन आत्मनो लघुतया वनतशिरोधरो वाडमिति सबहुमानम् उवाह। भगवानपि मनुना यथा वदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयोर अविसमीक्षमाणयोर आत्मसमवस्थान अवाङ्मनसं क्षयमव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्दितमनोरथः सुरर्षिवरा आत्मज अखिल धरामण्डलस्थिति गुप्तय आस्थाप्य स्वयं मति विषम विषय विषजलाशयाशाया उपरराम। इति ह वाव स जगतीपतिर्ईश्वरेच्छायाधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगद वंध ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्यांग्रि युगलान् अनवरत ध्यायानुभावेन परिरन्धित कषायाशयो वदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलम् अनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे वर्हिष्मतिं नाम तस्यामुहवाव आत्मजान आत्मसमान शील गुण कर्म रूप वीर्योदारान् दश भावयां बभूव। कन्यां च यवीयसीं ऊर्जस्वतीं नाम आग्निद्र एद्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेत घृतपृष्ठ शवन मेधातिथिर वीतिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन् ऊर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायाम् अर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंसमेवाश्रमम् अभजन्। तस्मिन्नु हवा उपशमशीला परमर्षयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा अविरत स्मरणा विगलित परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्ये वात्मन तदात्म्यम् अविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि जायायां त्रयपुत्रा आसन् उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयो। एवम् उपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीम् अवदान्यैकादश परिवत्सराणाम् अव्याहृताखिल पुरुष कार सारस संभृत दौरदंड युगल्यापीडितमौर्वीं गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो वर्हिस्मित्याश्चानुदिन मेदमान प्रमोद प्रसरण यौषिण्यव्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्षिल्यादिभिः पराभूयमानो विवेको इवानवबुध्यमानो इव महामना बुभुजे। यावदव भाषयति सुरगिरिम् अनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलमधैर्नैव प्रतपत्यर्धेन वच्छादयति तदा हि भगवद उपासनोपचिताति पुरुष प्रभावस्तदनविनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिर् अनुपर्यक्रामद् द्वितीय इव पतङ्गः। ये वाउ
तदरथचरणनेमिकृत परिखातास्ते सप्तसिन्धव आसन यत एव कृताः सप्तभुवोद्वीपाः जम्बु प्लक्ष शाल्मली कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तर उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन वही समन्तत उपक्लप्ताः। क्षारोद एक्क्षुरशोद सुरोद घृतोद दधिक्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोदाः सप्तजलधयः सप्तद्वीपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि वर्हिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्वादिषु वर्हिष्मति पतिरनुवृतानाम् आत्मजान आग्नेद्र एद्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेत घृतपृष्ठ मेदातिथे वीतिहोत्र संज्ञान यथासंख्यै नैकैकस्मिन् नैकमेवाधिपतिं विदधे। दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनशे प्रायच्छदश्चामासीत् देवयानी नाम काव्यसुता। नैवं विद पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजितसद्गुणानां चित्रं विदूरविगत श्रकदाददीत यन्नामधेयमधुना सजहाति वह्निम्। स एवं अपरिमितबलपराक्रम एकदा तो देवर्षिचरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेणैना निवृत्तिमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। अहो असाध्वन्तुष्टं यदविनिवेशितो हम इन्द्रियैरविद्यारचित विषमविषयान्दकूपे तदमल अमुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गृह्याश्चकार। परदेवता प्रसादादि गतात्म प्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विवज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव स महाविभूतिम् अपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार। तस्य वा एते श्लोकाः। प्रियव्रतं कृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमिनिं नैरकरोत् छायाग्नन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विवागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।